Namaskar सभी को. Today we will be dealing with class 11th relation and functions. Relation and functions is a very important chapter. So we will be doing not a full-fledged video on this. So some of the students have got exam tomorrow, CBSE. So we will be handling some of the quick revision on this chapter where you will understand all the concepts. I believe it will be all clear, but not in detail of this chapter. This chapter is very important, dear students. This year you will be studying, you have studied in before this is set, then relation and function. इसके बाद आएगा trigonometric function. Next year again you will study relation and functions. More little easier. This time you have to know it in deep about what is relation and what is functions. So in actually in relation there are many types of relation like symmetric, symmetric, transitive and all. Which we will be studying in next class, next year, not next class. So now in this we will be dealing with some of the basic terms that we need to know to make your 11th standard relation and functions easier. So there are, in set we have equal set, other etc sets we have. So what I feel are some of the important questions I will be doing with that. Just see this one of the common example. If you have G, or else we take T for trouble. We have 1, 2, 3, and we have O for orange. 2, no. We have 4, 5. Then what is T cross O and O cross T? कैसा लिखेगा मैं? पहले T cross O मतलब we will map this 1, 4. ये इससे मैप हो रहा है 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. And if you do the ulta one, you will have 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3. I hope you understood how it deals. Right? You have 4, 5, 4, 5, 4, 5. This is how you do with the basic knowledge of the first exercise. So we will be now going through one of the important questions of this. Right? I'll show you. Where we have A as minus 1, 1. This is an important question. हमें ढूंढना A cross A. 3 बार सेम चीज को मल्टीप्लाई करना तो कैसा होगा? -1, 1 into -1, 1 into -1, 1. इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है -1, पहले होगा आपका -1, -1. I hope you can see -1 पहले, फिर होगा -1, फिर 1, then it comes -1, 1, then -1, 1. You see how it is getting mapped? It's easy, dear students. Easily we are doing this. There is no much complication that has been there over here. Next you have, I hope the visibility is that clear. You have 1, पहले माइनस का प्लस हो जाएगा, -1, फिर मेरा लिखता हूँ 1, -1, 1, 1, -1 और लास्ट में 1, 1. ये है आपका चीज. So you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it is 2 to the power. How do we find the number? How do we find the number of terms? How do we get that? We will see that. So here it will be 2 to the power 3. 3 times you are multiplying that. So 2 into 2 into 2. 2 to the 4 is 8. So about 8 terms will be there. 8 terms we have. So this is a very important question, my dear students. Either for your boards, you have state boards or your CBSE boards. This is very important. I hope the knowledge is acquired from this question. Alright. This is a big chapter that we'll be doing now. You know the formula, how to find the things, how to find how much terms are there, कितना terms है, ये सब ढूंढना, you know how it is. It is not much complicated at all. So now we will go with one more question. The first exercise. Suppose a Cartesian product A cross A का है, जिसमें 9 elements है. सोचो A cross A है, जिसमें 9 elements है.
क्योंकि हमें एलिमेंट्स का नाम पता नहीं है, 9 एलिमेंट्स बोला है, उसमें दो है -1,0 और एक है 0,1. ओके, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग. हमें ढूंढना है व्हाट इज द सेट ए सेट क्या है और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है इसमें, बस. तो अगर मैंने ए लिया है ए बी सी, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा ए बी सी क्रॉस ए बी सी. यू विल गेट इट लाइक दिस. तो कैसे होगा आपका आंसर, आपका होगा ए कॉमा बी ए कॉमा सी, फिर होगा बी कॉमा ए बी कॉमा सी बी कॉमा बी कॉमा सी सी कॉमा ए सी कॉमा बी सी कॉमा सी. कितना आएगा? आई होप यू अंडरस्टूड दिस. विद दिस नॉलेज अगर इसमें हमने डाला है -1,0, राइट, इज इन द सेट ए क्रॉस ए, एंड इवन -1,0 है और 0,1 भी है, दोनों है. तो इफ यू सी a will be -1, b will be 0 and c will be 1. so क्योंकि मैं इसमें अगर डाल रहा है तो आपका a होगा माइनस, अब ये होगा आपका a, जो आपका -1 है वो होगा आपका a, राइट डियर स्टूडेंट्स, एंड ये होगा आपका b 0 है, तो ये b 0 है, तो ये b 0 है, और ये क्या होगा c होगा. तो मैंने इसमें से ये पता है मुझे, तो आप इसमें डाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा. तो क्या होगा, ए कॉमा ए मतलब -1,-1, सही है, -1,0 -1,1. फिर क्या है, बी कॉमा ए, बी क्या है 0, ए -1 0, बी 0 0,1. फिर आएगा 1, -1 1,0 1,1. How is it? I believe it is very clear. It is easy to understand from one. Thank you. So now we will be studying about to find ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइंड डोमेन एंड रेंज. Okay, right. If we get time, we'll be doing a complete class, 1 hour class on domain and range. It's a very important thing. So now time being we are taking a small video. So first we take f of x as minus mod x. इसका ढूंढना है हमें कैसे करना है. तो इसका x का वैल्यू अभी डालेंगे हम for any real value function it is. For any real value function, so we can put any number of values. Like so suppose अगर ले रहा मैं 2 1 0 -1 -2 कुछ भी ले रहा हूँ, कुछ भी ले लो, -3 कुछ भी ले लो, राइट. अभी इसका वैल्यू क्या होगा, x का माइनस ऑफ मॉड x का वैल्यू क्या होगा. इसका तो इधर 2 रहेगा 1 0 1 1 2, ये माइनस से प्लस हो जाएगा मॉड में. तो माइनस मॉड ऑफ x में कितना होगा ये, तो ये -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, -1 -2 ऐसा होगा. जो भी इधर प्लस है पूरा माइनस होकर माइनस से मल्टीप्लाई किया. ये अभी ये बोलो कि ये रियल नंबर है या नहीं, ये पूरा का पूरा रियल नंबर है. Everything is a real number. This is a real number, this is a real number, this is a real number, this all are real numbers. All are coming to a real number. So we are given this is a real function, dear students. Understand, it is a real function. So we check the values for all the things. We are getting the value also real function. ये भी real function में मिल रहा है. तो आप याद रखिए. तो डोमेन क्या होगा इसमें, डोमेन कैन बी आर, ओवरऑल आर, कुछ भी रियल नंबर होगा. पहला नंबर तो रियल नंबर होगा. तो we can simply write all the real numbers will be your domain. और range क्या है, range is 0 और negative numbers, या 0 या negative, लेकिन positive कभी नहीं रहेगा. तो range क्या है, right, 0 और negative होगा. तो कैसे लिखना हम, -∞ से 0 तक लिखेगा, right. But how we can't write it like this. Equal to 0 हो सकता है, लेकिन you know about this, linear inequality में पढ़ा है. It will be like x is greater than less than equal to 0 and greater than infinity. No, don't need that. Just infinity से देखो यहाँ से -1 माइनस से कहीं भी मैक्सिमम 0 तक आता है. तो बस इतना ही है. This is your first one. I hope you understood what is the scenario based on this, right?
इसको एक फॉर्मेट में लिखना है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है लिखना है. Did you understand? Okay. Now we will go to one more question based on this. There are 2-3 questions available in your miscellaneous and everything, but it is the same kind of thing. Now we will have next question, dear students. Here we have f of x equal to root of 9 minus x square. तो ये भी रियल वैल्यू के लिए, रियल फंक्शन के लिए, रियल फंक्शन. तो रियल फंक्शन है तो हमें ये पता होगा कि डोमेन और रेंज दोनों रियल होगा. ये पता होना चाहिए आपको पहले. तो वी विल स्टार्ट, जैसे आपने किया पहले x होगा, आपका रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी रहेगा. तो हमें देखना है कि क्या है. तो रियल फंक्शन है तो हम पॉजिटिव भी लेंगे, 2 0 -1 -4 कुछ भी ले लेंगे. और इसमें जब देंगे 4 डालना है तो 4 4 से 16, 9 माइनस 16 कितना होगा, रूट ऑफ -7 होगा. 3 हो तो क्या होगा, 9 0 होगा, राइट. एंड एक्सेट्रा ये ऐसे ही जाएगा. 2 है तो 9 माइनस 4 5 होगा, रूट 5. 0 है तो रूट 9 जो है 3. -1 है तो आपका क्या है, 1 स्क्वायर 8 आएगा आपका. और -4 है तो माइनस रूट 7 आएगा. तो आपका ये अभी देखना है डियर स्टूडेंट्स, -4 है, 16 है, वैसा आ जाएगा. तो ये रियल है, ये पूरा रियल है, पूरा रियल है, सब कुछ रियल है. लेकिन एक आदमी छोड़कर ये रियल है, तो ये छोड़कर बाकी सब कुछ रियल है. तो व्हाट कैन वी टेल दैट f of x lies between 0 to 3. ये तो लिख सकते हैं. तो डोमेन क्या है, पॉसिबल वैल्यू. डोमेन तो वी नो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन इट इज, हमें पता है कि इट्स अ प्रीवियस क्वेश्चन है, वैसे ये भी पूरा रियल नंबर ही है, बट वी डिफाइंड सम पर्टिकुलर वैल्यूज ओवर हियर. there it was just -x. we have here some value. so -3 से 3 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि x जो है वो लेस देन इक्वल 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, ऐसा लिख सकते हैं. सो आई कैन इवन राइट इट इज -3, -3. This is the way you write the domain. I hope you understand. क्योंकि 4 में तो नहीं हो रहा है भाई. 4 में तो you are getting not a real number. Imaginary form में आ रहा है. Complete imaginary. देखो -√7 क्या है? It is not a number. It is not a real number. It's imaginary. इसको लिखते हैं 7i complex form में. Now we'll go to range. Range में it's all possible value from 0 to 3 तक है. अब 0 से ऊपर 3 तक, इधर तक आपका रेंज में आएगा, राइट. तो मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये लेस देन इक्वल टू 0. तो आपका आएगा 0 से 3 तक, ये आपका रेंज है. आई होप यू अंडरस्टूड विद दिस क्वेश्चन. इतना ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वी नीड टू नो अबाउट द रिलेशन एंड फंक्शंस. Here we need to, we are always discussing about what is the outcome. इतना पढ़ो, your outcome is well defined. There is a miscellaneous question that also can pop out anytime. People might not know, those who are studying the last day of the exam, last night. So you have f of x दिया है x plus 1, g of x दिया है 2x minus 3. अब हमें ढूंढना है f of, देखो 2 फाइंड है. देखिए बच्चों, f plus g, f minus g, f by g. ये अगला साल के लिए इम्पोर्टेंट है. So how do you write this f of x का f, ये x defined with x. Any function, ये f of x है, ये g of x है, it is defined with x. तो इसका क्या फॉर्मूला है? It will be f of x plus g of x. याद रखिए, ये अगला साल के लिए भूलना मत. तो f of x क्या है आपका? x plus 1 f of x क्या है? मैं डाल दिया, प्लस 2x minus 3. क्लियर? अभी क्या है आपका 2x plus 3x, 2x plus x है 3x, 1 से 3 गया -2 है. ये आपका आंसर है, ये आपका इसका आंसर है. नेक्स्ट है f minus g of x. अब इसको कैसे लिखेगा मैं? f of x minus g of x. f of x क्या है बच्चों? this माइनस ऐसा होगा. देखिए स्टेप्स कैसा है, ये पढ़ के जाओ. माइनस माइनस प्लस 3 होगा. ये क्या है? माइनस x, बड़ा ये है, माइनस x प्लस 2. या इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस x. बेटर टू राइट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग. समझ में आया? अब आपका लास्ट है जो है f by g.
of x. तो इसको लिखेंगे f of x by g of x. f of x क्या है? आपका x plus 1 है. g of x 2x minus 3. I hope that was a question. Let me check out the question and come. Get back to you in a minute. Yes. Yes, students, this is a way of diagram. So this is what you need to know about relation and functions. Thank you, myself Abhiram. Nice to do a video on relation and functions. So we'll be doing more videos. Thank you so much.